Assalamu alaikum students. Uh, how are you all? I hope you all are fine and doing well. I am back with my second video. I am Sana Uruj, and today I'm going to complete the reading and explanation of the first lesson, that is the Earth in space. And then we will do the question answers of this lesson. Now the query which is raising after the first video is the book has changed. And now I am here to solve your query. The title of your book is this. This is the new edition of your book, New Oxford Social Studies for Pakistan. This is your new book, new edition of your book. But the first lesson is the same, the Earth in space. Now, in my last video, we have discussed about the first lesson, the Earth in space, and we have discussed about the Earth, the solar system, space, atmosphere, the moon, and how the days and night takes place on Earth in my last video. So we have done the page number 2 and half of the page number 3 in my last video. We have read it and we have explained it also. Now it is page number 2 and moving on to the page number 3. We have done the half of page number 3. Now I am going to read the next half page, the remaining part of this lesson. I'm starting from the second paragraph of page number 3, land and water. First, I'm going to read the lesson and then I'm going to explain it paragraph wise as we have done it before. Now, the surface of the earth is made up of land and water. Seas and oceans make up almost two-thirds of the earth's surface. Now, in first paragraph, they are telling us that most part of the earth is made up of water and it consists of seas and oceans. Okay, यानी ज़मीन का ज़्यादातर हिस्सा जो बना हुआ है वो पानी पे मुनहसर करता है, यानी 70% जो अर्थ है दैट इज़ मेड अप ऑफ वाटर, पानी से बनी हुई है, यानी मोस्ट ऑफ द पार्ट पानी है, और जो लैंड है दैट इज़ 30%। 30% जो हिस्सा है वो खुश्की से बना हुआ है जिस पे हम लोग रह रहे हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पैराग्राफ, the land near the sea is called the coast and it is usually very low. It is at the same level as the sea, so we say it is at sea level. In some places there are high mountains. Now, in this paragraph they are saying कि वो area, the area which is near the sea, उसको हम कहते हैं coast, ठीक है। वो एरिया जो नियर सी होता है यानी सी के करीब होता है उसको हम कहते हैं कोस्ट। और ये जो लेवल है इस पे जिस पे सी है और कोस्ट है इसको हम कहते हैं सी लेवल। और कुछ प्लेसेस ऐसे हैं जैसे माउंटेन्स हैं जो पहाड़ होते हैं, दैट इज कुछ प्लेसेस हैं जो कि अबव सी लेवल होते हैं यानी सी लेवल से ऊपर होते हैं, हाई माउंटेन्स होते हैं, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज,
They can reach a height or altitude of over 8,000 meters above sea level. Mount Everest in Nepal is the highest mountain in the world. It is 8,848 meters high. यानी जैसे मैंने आपको लास्ट पैराग्राफ में बताया कि माउंटेन्स अबव सी लेवल होती हैं, यानी हाइट उनकी बहुत ज़्यादा होती है। हाइट को हम एल्टीट्यूड भी बोलते हैं, ठीक है। और इनकी हाइट ओवर 8,000 मीटर्स तक जा सकती है, या 8,000 मीटर्स को भी क्रॉस कर सकती है। जो हाईएस्ट माउंटेन है दुनिया में इन द वर्ल्ड, द हाईएस्ट माउंटेन जो है दैट इज इन नेपाल। वो हाईएस्ट माउंटेन नेपाल में है और उसकी जो हाइट है दैट इज 8,848 मीटर्स हाई। यानी उसकी जो हाइट है वो 8,848 मीटर्स है। आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग यू ऑल। और जो पाकिस्तान में जो पीक है दैट इज हाईएस्ट इज K2। इस पिक्चर में आपको दिखाया जा रहा है K2 8,611 meters high, the second highest peak in the world। और ये जो K2 जो पहाड़ है, यानी ये जो पीक है, ये पाकिस्तान में है और ये सेकेंड हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड की, यानी दुनिया की सेकेंड हाईएस्ट पीक है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। Large areas of water on the earth are called oceans. Smaller areas are called seas. Sea water is salty. Some parts of the ocean are very deep. There are waves on the surface of the oceans, and there are waves on the surface of the oceans and seas. The water in the sea is always moving about. These movements are called currents. When there is a storm at sea, the wind causes high and rough waves. You should not go to the seaside in stormy weather. It is dangerous. Now, in this paragraph, यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि what are oceans and seas। अर्थ पे जो वाटर मोस्टली 70% मौजूद है, या तो ये ओशंस की शक्ल में है, एज एन ओशन है, या ये सी की शक्ल में है, या लेक्स की शक्ल में है, ठीक है। नाउ अब ओशंस क्या होते हैं? वाटर ओशंस लार्ज एरियाज ऑफ वाटर, यानी जो बहुत बड़े एरिया पे पानी मौजूद है दैट इज कॉल्ड ओशन, जिसे हम उर्दू में बरे आजम कहते हैं, ठीक है। अब वो जो ओशंस आपने सुना होगा कि ओशंस कितने हैं, 5 ओशंस हैं, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन। तो ये सारे जो हैं ये ओशंस हैं, ठीक है। और जो स्मॉलर एरियाज पे हैं, जो पानी जो स्मॉलर एरिया पे है, जो कम एरिया पे है, उसको हम सीज कहते हैं, यानी समंदर कहते हैं। और जैसे कि आप कराची सिटी में अगर आप रहते हैं तो आपका कराची सिटी जो है वो पोर्ट सिटी है, यहाँ पे भी समंदर मौजूद है। तो जब आप सी व्यू जाते हैं या आप टर्टल बीच जाते हैं, दैट इज द सी इन योर सिटी, ठीक है, ये समंदर है। सी वाटर इज सॉल्टी। सी वाटर जो पानी होता है, समुद्र का पानी, अगर आप सी बीच बीच वगैरह गए हो तो आपको पता है कि बहुत सॉल्टी होता है, यानी उसमें नमक बहुत ज़्यादा होता है। सम पार्ट्स ऑफ द ओशंस आर वेरी डीप। कुछ पार्ट्स जो ओशंस के होते हैं वो बहुत गहरे होते हैं, बहुत डीप होते हैं। देयर आर वेव्स ऑन द सर्फेस ऑफ द ओशंस एंड सीज। ओशंस और सीज में वेव्स होती हैं। वेव्स कहते हैं हम लहरों को, ठीक है। जो लहरें पानी में बन रही होती हैं उसको हम कहते हैं वेव्स। द वाटर इन द सी इज ऑलवेज मूविंग अबाउट। जो सी में, समंदर में जो पानी होता है वो मुस्तकिल, आप देखते हैं कि वहाँ पे वेव्स बन रही होती है, पानी वहाँ पे रुका हुआ नहीं होता, ठीक। वहाँ पे मुस्तकिल मूवमेंट होती है पानी में। वाटर इज कंटिन्यूसली मूविंग अबाउट। और इन मूवमेंट्स को हम क्या कहते हैं? हम इन मूवमेंट्स को कहते हैं करंट। व्हेन देयर इज अ स्टॉर्म एट सी, द विंड कॉजेज हाई एंड रफ वेव्स। जब आपने सुना होगा कभी समंदर में आंधी आ जाती है या तूफान आ जाता है, तो जो वहाँ पे हवा चल रही होती है उसकी वजह से समंदर में बहुत ही हाई और रफ वेव्स बनना शुरू हो जाती है। यानी हाई का मतलब बहुत ऊंची ऊंची लहरें, बहुत ऊंची ऊंची और रफ
यानी कि बहुत खतरनाक जो लहरें होती हैं, जो ऊंची और खतरनाक लहरें होती हैं जिसमें इंसान, कश्तियां डूब जाती हैं, शिप्स वगैरह सब डूब जाते हैं। तो इसलिए मना किया जाता है कि स्टॉर्मी नाइट में आप बिल्कुल भी ना जाएं समंदर के करीब, जब वहां पे बहुत तेज हवाएं चल रही हो या स्टॉर्म आई भी हो। यू शुड नॉट गो टू द सी साइड इन स्टॉर्मी वेदर, इट इज डेंजरस। यानी क्यों? क्योंकि ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है अगर आप स्टॉर्मी नाइट में जाते हैं, क्योंकि उस वक्त वहां पे जो हवा चल रही होती है वो बहुत ज्यादा हाई और रफ वेव्स बना रही होती है, यानी बहुत ऊंची ऊंची लहरें बन रही होती हैं। अच्छा जी। नाउ द डीपेस्ट पॉइंट इन द ओशंस इज द मैरियाना ट्रेंच इन द पैसिफिक ओशन, एंड इट इज 11,022 मीटर्स डीप। जो सबसे ज्यादा डीपेस्ट पॉइंट है, डीपेस्ट का मतलब जो सबसे ज्यादा गहरी तरीन जो पॉइंट है, जो ओशन में है, वो है मैरियाना ट्रेंच इन द पैसिफिक ओशन। और ये जो है, ये मैरियाना ट्रेंच जो है, ये पैसिफिक ओशन में एक पॉइंट है जो कि बहुत ज्यादा डीप है। और ये कितना डीप है? इट इज 11,022 मीटर्स डीप। इतना ज्यादा गहरा है ये। ऑन द ऑन द लैंड देयर आर hills and mountains. Hills are not as high and steep as mountains. The lowland between the hills or mountains is called a valley. A high area of land is called a plateau. Flat lands at lower levels are called plains. Achha, in the last paragraph, we have talked about the water, the 70% portion on the earth which is consist of water. हमने उसके बारे में बात करी। ठीक है कि वाटर किस किस शक्ल में मौजूद है, सीज और ओशन की शक्ल में मौजूद है। लार्जर एरिया है तो उसको हम ओशन कहते हैं, स्मॉलर एरिया ऑफ वाटर है तो उसको हम सी कहते हैं। नाउ, अब जो पैराग्राफ है आपके पास, इन दिस पैराग्राफ वी आर टॉकिंग अबाउट द लैंड ऑन द अर्थ। ठीक है, लैंड के बारे में अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। यानी जो जो खुश्की की जगह है अर्थ पे, उस पे हिल्स और माउंटेन्स हैं। ठीक है, यहाँ पे हिल्स और माउंटेन्स हैं। हिल्स आर नॉट एज हाई एंड स्टीप एज माउंटेन, यानी कि माउंटेन्स जो आपने, आपको जैसे पहले बताया कि बहुत ऊंची ऊंची और हाइट बहुत ज़्यादा होती है माउंटेन्स की, और ऊंची नीची माउंटेन्स होती हैं बहुत ज़्यादा। तो हिल्स में ऐसा नहीं है। जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ होती हैं उनको हिल्स कहा जाता है। ठीक है, और वो उनकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा नहीं होती। A low land between the hills or mountains is called a valley. यानी कि वो जगह जो कि दो हिल्स, जो छोटी पहाड़ियों के बीच में हो या दो पहाड़ों के बीच में हो, जहाँ पे लोग रह रहे हो, बहुत ही खूबसूरत सी जगह होती है ये, जिसको हम वैली कहते हैं। ठीक है, अब वैली की एग्जांपल अगर आप देखें तो इन पाकिस्तान देयर आर लॉट्स ऑफ वैलीज लाइक द हुंजा वैली। हुंजा वैली अगर आप नॉर्दर्न एरियाज में गए हो तो वहाँ आपको नजर, आपने सुना भी होगा और बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा। हुंजा वैली इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ वैली इन पाकिस्तान। इसी तरह हम कश्मीर वैली, कश्मीर को भी हम वैली ही कहा जाता है, हम कश्मीर को भी वैली ही बोलते हैं। ठीक है, कश्मीर वैली है। अच्छा जी। अ हाई एरिया ऑफ लैंड इज कॉल्ड अ प्लेट्यू। प्लेट्यू क्या है? एक हाई एरिया ऑफ लैंड है। ठीक है, यानी सी लेवल से ऊपर की लैंड है, इसको हम प्लेट्यू कहते हैं। इसके साथ साथ जो लोअर लेवल्स पे होती है, यानी ये सिर्फ रेतीली जगहें होती हैं, यहाँ पे प्लेन्स होते हैं ये। ठीक है, अब इसके बाद हम अगर इसके नेक्स्ट पैराग्राफ पे हम मूव करते हैं। Some parts of the land have very little water. These places are often sandy and rocky and are called deserts. अब कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं हमारे लैंड पे जहाँ पे पानी बहुत कम होता है। ठीक है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ खुश्की होती है, लैंड होती है, वहाँ पे बारिशें बहुत कम होती हैं। वहाँ पे सिर्फ आपको सैंड नजर आती है, यानी आपको वहाँ पे मिट्टी नजर आएगी, रॉक्स नजर आएंगी, लेकिन वहाँ पे पानी नहीं है। तो ऐसी जगह को हम कहते हैं डेजर्ट। और एग्जाम्पल अगर आप देखें पाकिस्तान में डेजर्ट की, तो दैट इज थर, थर डेजर्ट एंड चोलिस्तान डेजर्ट। ये एग्जाम्पल्स हैं पाकिस्तान में जो डेजर्ट्स मौजूद हैं उनकी।
Now, in some parts of the earth, there is a lot of ice and snow. अब अर्थ के कुछ पार्ट्स में बहुत ज़्यादा आइस है, यानी कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा आप देखेंगे कि स्नो से, बर्फ से ही वो पहाड़ जो है वो कवर होते हैं। कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्नोफॉल हो रही होती है, आइस होती है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज। Very cold, very high mountains are often covered by snow. In other parts, there are thick forests. अच्छा, अच्छा जी, जैसे मैंने आपको बताया, एक्सप्लेन किया कि कुछ लैंड्स, कुछ पार्ट्स अर्थ पे ऐसे हैं, लैंड पे, जहाँ पे सिर्फ स्नो होती है, जहाँ पे सिर्फ आइस होती है, स्नो होती है। जैसे कुछ कॉन्टिनेंट ऐसे हैं, जैसे एक कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट एंटार्क्टिका, वहाँ पे सिर्फ आइस होती है। ठीक है, कॉन्टिनेंट है अंटार्कटिका, जहाँ पे बहुत ज़्यादा आइस होती है, और वहाँ पे सिर्फ मतलब इतनी ज़्यादा ठंड है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा आपकी एक्सपेक्टेशन से ऊपर होती है वहाँ पे, जो कोल्डनेस है वहाँ पे। ठीक है, इसी तरह से वेरी हाई माउंटेन्स आर ऑफन कवर्ड बाय स्नो, और इसी तरह बहुत ज़्यादा जब हाई माउंटेन्स होती हैं, जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे भी ज़्यादातर स्नो होती है। इन अदर पार्ट्स देयर आर थिक फॉरेस्ट, इसके अलावा जो लैंड पे कुछ पार्ट्स हैं वहाँ पे फॉरेस्ट होते हैं, जंगलात होते हैं। Now moving on to the next paragraph. An area of land surrounded by water on all sides is called an island. A body of water surrounded by land on all sides is called a lake. अच्छा जी, अब जो लैंड पे एक एरिया ऑफ लैंड है जो कि जिसके आसपास चारों तरफ पानी है, ठीक है, लेकिन एक एरिया है जहाँ पे लैंड है, उसके आसपास हर जगह आपको पानी नजर आ रहा है, उसके बीच में एक खुश्की की जगह है या लैंड है, तो उसको हम कहते हैं आइलैंड। ठीक है, आइलैंड जो आजकल आपने एक पिकनिक पॉइंट भी आजकल एक बना हुआ है, दैट इज कॉल्ड झरना आइलैंड, जिसका आपने नाम सुना होगा आजकल अगर, तो वो क्या है, वहाँ पे एक लैंड है, लैंड है, और उसके आसपास हर जगह क्या है, वहाँ पे पानी ही पानी मौजूद है, यानी कि समुद्र के बीच में जैसे एक लैंड है जहाँ पे लोग पिकनिक मनाने के लिए जा रहे हैं और वापस आ रहे हैं, और उसको हम आइलैंड बोल रहे हैं। और इसी तरह से डिफरेंट कुछ कंट्रीज भी ऐसे हैं जो कि आइलैंड ही हैं, उनके आसपास हर जगह पानी है, और वो मतलब वो एक लैंड है खुश्की की जहाँ पे वो कंट्री बना हुआ है, या कोई एक ऐसा पिकनिक पॉइंट है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी झरना आइलैंड, इट इज ऑल्सो आइलैंड। इसी तरह से अ बॉडी ऑफ वाटर सराउंडेड बाय लैंड ऑन ऑल साइड्स इज कॉल्ड अ लेक। अब कोई एक ऐसा पानी है जहाँ पे इट इज सराउंडेड बाय द लैंड, जहाँ आसपास उसके चारों तरफ खुश्की है, लैंड है, लेकिन बीच में एक पैच है जहाँ पे पानी मौजूद है, तो उसको हम कहते हैं लेक, झील बोला जाता है उसको उर्दू में। और यहाँ पे अगर आप पाकिस्तान में इसकी एग्जांपल्स देखें, तो सैफुल मलूक, आपने नाम सुना होगा, नॉर्दर्न एरियाज में सैफ झील सैफुल मलूक बोला जाता है, सैफुल मलूक लेक। इसके अलावा केंझर, केंझर लेक जो है, वहाँ पे बहुत सारे लोग पिकनिक के लिए जाते हैं, तो वो भी एक लेक है जहाँ पे पार्ट ऑफ वाटर है, जो कि एक पैच ऑफ वाटर है वहाँ पे, और उसके अराउंड हर जगह खुश्की है, लैंड है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। We get fresh water from lakes and rivers. Rivers begin in the mountains and flow down into lakes or the sea. It is important to keep our lakes and rivers clean. Polluted or dirty water cause animals and plant life in it to become diseased and die out. It upsets the cycle of nature and causes more problems. अच्छा जी, अब जो फ्रेश वाटर होता है, जो अच्छा पानी है जिसको इंसान पी भी सकता है, वो हमें लेक्स और रिवर्स से मिलता है। अब रिवर्स जो है वो फ्लो करते हैं माउंटेन से, और फिर जो दरिया का पानी होता है वो माउंटेन से फ्लो करता हुआ आता है, और फिर वो सी और लेक में जाके गिरता है।
ठीक है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हमारे जो लेक्स हैं, जो हमारे रिवर्स हैं, उसको हम साफ सुथरा रखें, उसको हम क्लीन रखें। क्योंकि आपको पता है कि अगर गंदा पानी है, पॉल्यूटेड वाटर है, तो ये जो एनिमल्स, जो प्लांट लाइफ जो सी में है, या जो प्लांट एनिमल लाइफ जो लैंड पे है, जो जो लोग पानी पी रहे हैं, उनके लिए वो बहुत खतरनाक होता है। उनको बीमारियां भी उससे हो सकती हैं, वो डाई आउट भी हो सकते हैं, यानी वो मर भी सकते हैं। ठीक है। इट अपसेट्स द साइकिल ऑफ नेचर एंड कॉज मोर प्रॉब्लम्स। और इसी तरह से अगर हम पानी को पॉल्यूट करते रहें, तो ये जो एक साइकिल बना हुआ है, जैसे जो हमें जो अल्लाह ताला ने एक साइकिल बनाया पानी का, तो वो कॉजेस इट एंड कॉजेस मोर प्रॉब्लम्स। यानी कि अगर पॉल्यूटेड वाटर हम उसमें लेक्स में डालेंगे या उसको पॉल्यूटेड कर देंगे, तो जो नेचुरल जो साइकिल है अल्लाह ताला ने जो पानी का रखा है, उसको भी वो भी खराब होने का बायस बनेगा, और उसके अलावा उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। ठीक है। देयर आर मैनी अदर लैंड फॉर्म्स ऑन द अर्थ which you will learn about later। यानी जो लैंड फॉर्म्स मैंने अभी आपको बताए हैं, जैसे हमने डेजर्ट पढ़ा, जैसे हमने प्लेट्यू पढ़ा, प्लेन पढ़ा, हमने आइलैंड पढ़ा, तो दीज आर द फॉर्म ऑफ लैंड फॉर्म्स ऑन द अर्थ। यानी कि अर्थ पे जो लैंड फॉर्म्स हैं, मुख्तलिफ किस्म की लैंड्स किस शक्ल में मौजूद हैं, उनकी टाइप्स हैं। और जब आप मूव करेंगे आगे क्लास में, तो आपको कम इसके बारे में और जानने को जानेंगे, और उसके बारे में और मालूमात आपको मिलेगी। ठीक है। नाउ द लेसन हैज एंडेड हियर। यहाँ पे आपका लेसन जो है वो कंप्लीट हो गया। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड द होल लेसन। आई होप सो। Now we are going to do the question answers of this lesson. I have shown you your copy in the last video, and I have told you to make the index on the second and the third page in your copy. Okay. I have told you to show the serial number, date, topic, teacher sign, parent sign on the index. So when you start to do the question answers, you have to write down the date of a date of that day. So today is 38th of June. So I have written the date, the first chapter, the Earth and Space, and we are going to do the question answers today. So I have written it here also. Okay. Now after filling the index, move on to the next page. Now moving on to the next page, you have to write down the date on that page, you have to write down the day, and then you have to write down the topic, chapter number 1, the Earth and Space. And then you are going to start the question answers of the lesson. Question number 1 is, what do we find in space? हमें स्पेस में क्या नजर आता है, हमें स्पेस में क्या मिलता है, क्या क्या चीजें मौजूद हैं स्पेस में? The answer is, we find 8 planets and millions of stars in space. It's यानी कि हमें स्पेस में क्या मिलता है, हमें बहुत सारे वहाँ पे स्टार्स देखने को मिलते हैं, और वहाँ पे बहुत सारे स्टार्स मौजूद हैं स्पेस में, और इसके अलावा पूरा सोलर सिस्टम है और जिसमें 8 planets हैं. Now the second question is, what is the sun made of? सन किस चीज से बना है, यानी सूरज किस चीज से बना है? The sun is made up of hot glowing gases, जो मैंने आपको पहले भी बताया था in the explanation of the lesson in my first video. किस चीज से बना हुआ है सन? It is made up of hot glowing gases, यानी कि बहुत ज्यादा हॉट, बहुत गर्म गैसेस से मिलके बना है
बना है सन, और ये हमारे लिए इसीलिए मेन सोर्स ऑफ हीट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द अर्थ सराउंडेड बाय? अर्थ के आसपास क्या है, या अर्थ जो है वो किस चीज, अर्थ के आसपास क्या चीजें मौजूद हैं? ठीक है। द अर्थ इज सराउंडेड बाय एटमॉस्फेयर विच इज मेड ऑफ लेयर्स ऑफ एयर। यानी कि अर्थ के आसपास एक एटमॉस्फेयर है, एक एटमॉस्फेयर है जो कि किस चीज से बना हुआ है? वो एटमॉस्फेयर लेयर्स ऑफ एयर से, जिसके अंदर एयर मौजूद है, डिफरेंट लेयर्स ऑफ एयर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, डज द अर्थ स्टे इन वन प्लेस? क्या अर्थ एक जगह पे रुकी रहती है? नो, द अर्थ डज नॉट स्टे इन वन प्लेस, इट इज ऑलवेज मूविंग। अर्थ किसी एक जगह पे रुकी नहीं रहती है, इट इज कंटिन्यूसली मूविंग, ये मुस्तकिल मूव कर रही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डू डे एंड नाइट टेक प्लेस? यानी जो दिन और रात का जो सिलसिला है अर्थ पे, किस तरह से होती है, दिन और रात किस तरह से होती है अर्थ पे? सो द आंसर इज, द स्पिनिंग मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन कॉजेज डे एंड नाइट। स्पिनिंग मूवमेंट ऑफ द अर्थ यानी कि अर्थ जो अपने एक्सिस पे घूम रही है, उसकी वजह से जो अराउंड द सन, उसकी वजह से डे और नाइट होता है, यानी सुबह, दोपहर और रात का टाइम इस तरह से चेंज होता है अर्थ का। क्यों, किस वजह से? स्पिनिंग मूवमेंट की वजह से। व्हाट हैपेंस व्हेन देयर इज अ स्टॉर्म एट सी? अगर सी में आंधी आई हुई है तो क्या होता है? व्हेन देयर इज अ स्टॉर्म एट सी द विंड कॉजेज हाई एंड रफ वेव्स। जब आंधी आई हो सी में या समंदर में, तो जो वो हवा होती है वहाँ पे, जो बहुत तेज हवा चल रही होती है, उसकी वजह से हाई वेव्स, यानी बहुत ऊंची ऊंची लहरें और रफ लहरें वहाँ पे बनती हैं। अच्छा जी, यू हैव टू डू ऑल दीज क्वेश्चन आंसर्स इन योर कॉपी, in your red copy which I have shown you in my last video. I hope you all have understand the lesson, and I hope you all have understand these question answers. So do it in your copy, maintain your copy properly, and then wait for my next video. Okay, till then, Allah Hafiz and take care.